everyone. Hi guys, this is Sheetal Chaudhary, your accounts master teacher, and I welcome you all to Vedantu Commerce. We all are here for a better future. So, I hope that now all of you are aware of vote and all of you have registered yourself for vote. If not, then it's not fair. Go and register yourself now for vote because ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये कम बैक है हमारा. So guys, as we all know, 2020 was a setback of our learning and it has affected our learning badly. हमारी पढ़ाई बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ 2020. So now take a pledge to your comeback, for your comeback, and your comeback will start with this vote. Your comeback will start this moment. So now tell me where you guys are from. कहाँ से है आप लोग? You are from which part of the country? Tell me in the chat box. You are from which part of the country? North, east, west or south? And from which city? So, these are your dates for the voting. The vote will be conducted in the 4 days. 28th March, 4th April, 11th April and 18th April. And you can appear for voting on any of these days. आप किसी भी डेट पर वोट appear हो सकते हो, किसी भी दिन आप वोट दे सकते हो as per your comfortability, as per your availability. So on the day whichever suits you the most, register yourself for that day. Because come back तो जरूरी है, तो हमें register तो करना पड़ेगा, वरना come back कैसे होगा? And we are making this comeback because we will be doing your in-depth performance analysis with All India rank. So this will be done all over India and you will be getting All India rank. Also, we will be providing guaranteed scholarship to the winners from a pool of over 500 crore. So you will be getting guaranteed scholarship. You can win daily exciting prizes worth ₹1 crore. तो डेली आप जीत सकते हैं अमेजिंग प्राइजेस. काश मैं भी पार्टिसिपेट कर पाती. And the most important thing that I want to do, don't know about you, that you can also get a chance to be the Vedantu CEO. Yes, you can also become the CEO of Vedantu for 1 day. And you can also win a trip to NASA. So, itne sare amazing gifts hai. And then, why you guys are not registered yourself for vote till now? So make your comeback with Vedantu online talent exam with vote so that you can have your in-depth performance analysis and you can win exciting prizes. So you can win all these amazing prizes. You can win Kindle, EcoDot, JBL headphone and many more prizes. So आप जीत सकते हैं ये सारे prizes by participating in the vote. And most important thing, you can make a comeback, guys. So, are you guys excited about vote now? Because अभी तक तो suspense था कि क्या है ये vote, कैसे दे पाएंगे हम vote. अब तो सब कुछ पता चल गया है. So, are you guys excited? So, everyone is excited, huh? So, if you want to know more about vote, if you don't have the full knowledge of vote, then wait till the end of this session or you can visit the link given below. Or you can also download our app Vedantu or you can visit the link. So what you have to do to give vote is you have to register yourself first. First you have to register yourself, only then you will be applicable to vote. Once you register yourself, you will get your voter ID card. And you can select the voting days.
on which day you want to give vote. You can select as per your choice. And then it's all done. So, if you have not registered yourself till now, go and register yourself now so that you can win the guaranteed scholarship and you can win these all exciting gifts and you can become the CEO of Vedantu. So, now want to know the format of exam? So, this is your exam format that कैसे होगा आपका exam in this vote. So you will be having 3 subjects: accounts, business studies and economics. And there will be total 90 questions. 30 questions of each subject will be there. 30 questions of accounts, economics and business studies. Marking pattern is you will be having 4 marks of every correct answer and there will be negative marking for every incorrect answer. So 1 mark will be deducted for every wrong answer and you will get total 90 minutes to attempt this exam. So this is your exam format for class 11. So the most important thing, you can also play with your friends. You and your friends can participate together in this vote. Don't want to play alone? It's okay. Make your squad. Go to my squad column and then create your squad and win big gift. So you can invite your friends here and you can play together. So जाइए अपने friends को बताइए और squad बनाइए and play together to win the big and exciting gift. So now you are all set to make a comeback. So register yourself now to participate in vote this year so that you can give vote this year. Now coming back to our session, as you all know, this is class 12th trailer series. Till now we have completed most of the chapters and we are going to continue it further. So now get set ready for your class 12 because now it's time to get ready for class 12. Exams are over of all these students. So now it's time to get ready for class 12 and do the preparation of class 12. So guys, if you are new to our channel Vedantu Commerce and if you have not subscribed to our channel yet, then please take a moment to subscribe to our channel and also do like this session and do share this with your friends. Also for upcoming session and for upcoming notes, you can join us on Telegram group Vedantu Commerce. The link is given in the description box below. And if you want to know what is there in class 12, what all topics are there, what all chapters are there, then stay tuned till the end of this session. So now let's start this session without any delay. And let me tell you that this is a recorded session. So I won't be able to reply to your comments. So don't feel bad that ma'am you are ignoring us. I'm not ignoring you. This is a recorded session so I can't read your comments. But you need to be very attentive. So आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to learn the chapter, 5th chapter. This is not 5th, this is 6th chapter, dissolution of partnership. And this is the last chapter of your first book. This is the last chapter of first book, dissolution of partnership. हमने partnership पढ़ लिया. What is partnership? Partnership is the relation between two or more member. Partnership क्या है? एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जिन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया that now they will distribute the profit of the business carried on by all or any one of them. तो जैसे रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है ना, वैसे डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है. जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है रिलेशनशिप में,
वैसे ही यहाँ पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है. सो डिसोल्यूशन इज सेम एज ब्रेकअप. डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप क्या हो रही है, खत्म हो रही है. जैसे रिलेशन खत्म होता है वैसे पार्टनरशिप खत्म होती है, एंड दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो अब आपको आइडिया आ गया कि डिसोल्यूशन क्या होता है. व्हाट इज डिसोल्यूशन? इट इज एंड ऑफ द पार्टनरशिप. नाउ देर आर टू टर्म्स. आज हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इन विच स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. वी विल डू dissolution of partnership and we will do dissolution of partnership firm. अब यहां पर दूसरे वाले पॉइंट में सिर्फ एक पॉइंट, एक वर्ड ऐड हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दीज आर टू डिफरेंट थिंग. ये दोनों एकदम अलग है. स्टूडेंट्स थिंक दैट दीज आर बोथ सेम. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and dissolution of partnership firm, they both are same, but this is very different. और पेपर में इसी का डिफरेंस पूछा जाता है. in boards exam you will find it a lot of time that they will ask you the difference between these two terms. So now we are going to understand the difference between the dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. So first, partnership can get dissolved. क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है? What do you think? क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. रिश्ते टूट जाते हैं और पार्टनरशिप भी टूट सकती है. So yes, partnership can also get dissolved. Now, what is dissolution of partnership? What is the actual meaning, ma'am? Actual मतलब क्या है इसका? तो आइए देखते हैं इसका असली मतलब, actual definition. Dissolution of partnership means termination of old agreement. आपका जो पुराना एग्रीमेंट है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. The old agreement will terminate, will come to end, and a reconstitution of firm will happen due to admission, due to retirement, due to death of the partner. आप सोच रहे होगे ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है. Yes, you all have read this. This is reconstitution of firm. When reconstitution happens, when reconstitution of firm happen, the old agreement ends and the new agreement comes into existence. And that is known as dissolution of partnership. जब भी आपके एग्रीमेंट में चेंज आता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. So what is dissolution of partnership? Dissolution of partnership means end of old agreement, or it is a reconstitution of firm due to admission, due to retirement, due to death, due to amalgamation. This is dissolution of partnership. Now tell me, क्या यहाँ पर बिजनेस बंद हो रहा है? When the partnership is dissolved, is the business ending? Will the business come to an end? क्या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी? What do you guys think? It will dissolve or it will not dissolve? बताइए, पार्टनरशिप के साथ आपका बिजनेस बंद होगा या नहीं होगा? So the answer is no, business बंद नहीं होगा. So it may or may not result into closing down of the business. बिजनेस बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, because it all depends on the partner. पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं और दे वांट टू कैरी ऑन. So
It may or may not result into closing down of business, as the remaining partner may agree to carry on the business. अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो कैरी करेंगे तो बिजनेस चलते रहेगा. अगर उन्होंने सोचा कि बिजनेस बंद कर देते हैं तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. सो दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ. आपका बिजनेस विल कंटिन्यू एज इट इज. योर फर्म इज नॉट डिसॉल्व. फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, बिजनेस बंद नहीं हुआ. दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बिजनेस इज क्लोजिंग. सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस बिजनेस ही क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पर फर्म डिसॉल्व हो रही है. अगर फर्म बंद हो रही है इसका मतलब पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, और जब बिजनेस बंद होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी बंद होगी. अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी. जब बिजनेस ही नहीं रहा, सो व्हाट विल द पार्टनर्स डू? So with dissolution of firm, the partnership automatically gets dissolved. So dissolution of partnership firm means that the firm closes down its business and it comes to an end. The firm closes down its business and it comes to an end. Now when the firm is dissolved, business बंद हो गया, तो आप क्या करोगे? दुकान पे ताला लगा दोगे, उसके अंदर जो भी सामान है ऐसे छोड़ दोगे, जिससे पैसा लिया था उसका पैसा नहीं दोगे? ऐसा नहीं हो सकता. जब आप बिजनेस बंद करोगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यू विल सेल ऑल दी एसेट. आप जितने भी आपके एसेट पड़े हैं सबको बेच दोगे. द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड. और आपने जिससे भी पैसा लिया था, ऑल योर लाइबिलिटीज विल बी पेड. सबका हिसाब कर दोगे. योर लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ. अब मैंने एसेट्स बेचे 10 लाख के, एसेट्स वर सोल्ड फॉर 10 लाख, लाइबिलिटीज वर पेड फॉर 6 लाख, स्टिल आई हैव रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 4 लाख. जो बचा हुआ पैसा होगा, आउट ऑफ दैट रिमेनिंग अमाउंट the account of the partner are settled. पार्टनर्स का भी तो हिसाब करना पड़ेगा ना. जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, you have to settle their capital account also. So out of the remaining amount, you will settle the capital account of the partner. This is dissolution of firm. हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारी पार्टनरशिप बंद हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? We will sell all the asset, we will pay all the liabilities, and out of remaining amount, we will settle the capital of the partner. This is dissolution of partnership firm. Now, do we need to do any accounting procedure? Do we need to follow any accounting process at the time of dissolution? क्या डिसोल्यूशन के टाइम पे भी हमें कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? सो द आंसर इज yes. You have to follow a particular accounting procedure to maintain your books. So at the time of dissolution, we have to prepare these 4 accounts. आपको डिसोल्यूशन के टाइम पे ये 4 अकाउंट बनाने होते हैं. हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कैश और बैंक अकाउंट बनाना है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में 4 अकाउंट बनते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, दिस इज डिफरेंट, ये आपने पहले किसी और चैप्टर में नहीं करा. पार्टनर्स लोन, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, पार्टनर्स लोन अभी तक हमने नहीं बनाया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज सिमिलर, पार्टनर्स कैपिटल हम
पहले वाले चैप्टर्स में बना चुके हैं. वी हैव प्रिपेयर्ड दिस इन द प्रीवियस चैप्टर. एंड कैश और बैंक अकाउंट, दिस इज ऑल्सो न्यू. So this chapter is not similar than the previous chapter. This is a new concept, new chapter for us. So isme we have to prepare these 4 account: realization, partner's loan, partner's capital, and cash or bank account. Now after preparing these 4 account, you will follow these accounting steps. We will follow these 8 to 9 accounting steps. Let's have a look at these steps. The first step is to open necessary account. You will prepare the format of necessary account: realization account, partner's loan account, partner's capital account, and balance sheet. You will open the necessary account. Then you will transfer the reserves and losses to the partner capital account. Balance sheet will be given to you. In that balance sheet, some reserves will be given, some losses will be given. So losses and reserves, they are distributed between partner. So what you will do in the second step, you will transfer those profit and losses and reserves to the partner capital account because they belong to partner. After that, third step, we will transfer all the assets to realization account. आपको बैलेंस शीट में जितने भी एसेट गिवन होते हैं उन सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. सिमिलरली यू विल ट्रांसफर लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. हम लोग लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे टू दी रियलाइजेशन अकाउंट. लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, एसेट्स ट्रांसफर कर दिए. क्यों करें हमने ये ट्रांसफर? Because we have to close the account of asset, we have to close the account of liability. हमें assets का account close करना है, liabilities का account close करना है. हमें books क्या करनी है? Close करनी है. So for that purpose you will transfer asset and liability to the realization account. इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? realization account. अब हमने एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिए, अब हम एसेट्स को बेचेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट. इसका मतलब होता है सेल ऑफ एसेट. रियलाइजेशन ऑफ एसेट मींस यू विल सेल योर एसेट. सो पहले आप ट्रांसफर करोगे दोनों को, आफ्टर दैट यू विल सेल योर एसेट, एंड आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट यू विल पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. जब आप ये एसेट्स बेचोगे और ये लाइबिलिटीज पे करोगे, क्या वो ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, कुछ खर्चे पे करने पड़ेंगे. आप ट्रैवल करोगे या फिर आप किसी को कमीशन दोगे, सो देयर विल बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो वंस द एसेट्स आर रियलाइज्ड, वंस द एसेट्स आर सोल्ड, जैसे ही आप एसेट बेच देते हो, द नेक्स्ट स्टेप इज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. आप अपने खर्चे पे करोगे जो अभी तक हुए हैं. एंड आफ्टर दिस यू विल पे योर आउटसाइड लाइबिलिटी. अब ये बताओ कि अगर आपने घर वालों से भी पैसा लिया है और बाहर वालों से भी पैसा लिया है, तो पहले आप किसका पैसा वापस करोगे? पहले आप बाहर वालों का पैसा वापस करोगे. ऑलवेज वी फर्स्ट पे टू द आउटसाइडर. So once you have paid the realization expenses, after that you will pay outside liability. Creditors को पे करोगे, bills payable को पे करोगे, जो बाहर के liability है उसको पे करोगे. And after payment of outside liability, you will pay partners loan. क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन गिवन होगा, तो बाहर वाला पैसा पे करने के बाद हम अपने पार्टनर का लोन पे करेंगे. देन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन यू विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट. हम रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे. अब जब बंद करेंगे, व्हेन यू विल क्लोज दिस रियलाइजेशन अकाउंट,
there will be either profit or there will be loss. There will be either profit or there will be loss, which will be also transferred to the capital account. That profit or loss will be transferred to capital account, and in the last you will close capital account and you will pay capital to the partner. So सबसे लास्ट में हम लोग पार्टनर की कैपिटल पे करते हैं अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा होता है. So this is the whole accounting process that we will follow in the dissolution chapter. तो ये पूरा प्रोसेस मैं अगेन चैप्टर में समझाऊंगी. आई विल एक्सप्लेन दी होल प्रोसेस अगेन विद द क्वेश्चन इन दैट चैप्टर, बिकॉज अगर अभी समझाऊंगी यू विल गेट कंफ्यूज. सो वी विल डू दिस इन द मूवी विद द क्वेश्चन. So this is your process that you have to follow in the dissolution chapter. Now let's see कि realization account क्या होता है. It will be very interesting. So now we are going to explain you the realization account and this process. थोड़ा सा समझाते हैं, ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे. मैंने बोला था बैलेंस शीट will be given to you. So here is the balance sheet. What is the first step? First step is to prepare the account. So what you will do, you will prepare the realization account. तो मैंने realization account बना लिया. The format of realization account is, it is same as any ledger. Particulars, amount, particulars, amount. जैसे हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, ये सेम है. फॉर्मेट, दिस इज योर डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, right hand side credit side. So particulars amount, particulars amount. First you will transfer your asset. पहले आप क्या करोगे, हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, I am just explaining you this realization account. First we will transfer assets. तो assets को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं. You will transfer assets to the debit side. तो बैलेंस शीट में हमें एसेट्स गिवन है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी. वी विल ट्रांसफर ओनली दीज 4 एसेट. अब आप सोच रहे होगे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर नॉट ट्रांसफरिंग बैंक, व्हाई वी आर नॉट ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट. बिकॉज आपने कैश और बैंक अकाउंट बनाया, तो ये बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा, इट विल गो टू बैंक अकाउंट. एंड दिस इज जुबेद करंट अकाउंट, दिस विल गो टू कैपिटल अकाउंट. तो जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड है वो बैंक अकाउंट में जाएगा, जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा. So only these 4 assets will be transferred to realization account. So you will transfer this to the debit side. 2 sundry asset, debtors, stock, furniture and machinery. Then you will transfer liability to the credit side. फिर आप liability transfer करोगे. अब आप सोच रहे होगे liabilities तो बहुत सारी है, मैम सिर्फ एक क्यों ट्रांसफर कर रही है, because workman compensation fund, this is reserve, this will be transferred to partners capital account. General reserve, it will be transferred to partners capital account. Current account, it will be transferred to partners capital account. And capital account balances, it will be transferred to capital account. So all other items will be transferred to capital account except creditor. So this is the only liability which we will transfer to realization account. So you will transfer it to the credit side. By sundry liability, creditors will be transferred. Now, after the transfer of asset and liability, you will sell your asset. And when you sell your asset, you record on the credit side. So assets realized, when you sell your asset in the market, it is recorded on the credit side. Also, if you have given any asset to your partner,
if any of your asset is taken over by the partner, then that will be also recorded on the credit side. So sometime the asset is sold in the market, or sometime it is taken over by the partner. So if it is sold in the market, you will record in the credit side. And if it is taken over by partner, then also it will be recorded on the credit side. So this is taken over by partner. So asset sold in the market and asset taken over by the partner, we will record on the credit side. जब asset जाएगा, आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे. And payment of expenses, payment of liability will be recorded on debit side. Payment of expenses, payment of liability will be recorded on the debit side. So this is payment of expenses and payment of liability. So ये है आपके realization account, ये है आपका realization account, and this is how you will prepare it. You will transfer your asset, you will transfer your liabilities, then you will sell your asset, your partner will take over your asset, you will pay your liabilities, you will pay your expenses. And after doing each and every transaction, after recording each and every transaction, आप क्या करोगे? दोनों साइड को कंपेयर करोगे, जैसे हम लोग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में करते थे. हम लोग क्या करेंगे? वी विल कंपेयर द टोटल ऑफ डेबिट with the total of credit, as we used to do in the trading and P&L account. Now in this, your debit side is more than the credit side. तो अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है तो क्या होता है? लॉस होता है. सो दिस इज लॉस ऑफ रियलाइजेशन, जिसको हम लोग बांट देंगे बिटवीन पार्टनर. दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी पार्टनर. उनकी रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट. आपको सिर्फ उस प्रोसेस को फॉलो करना है और रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप बन जाएगा. So you have to go through all these accounting steps and you can easily prepare your realization account. So मैंने सिर्फ अभी steps को समझाया है, मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया, because if I will explain it right now, it will become complicated for you. So let keep it easy. We will do this proper question at the time of chapter, at the time of movie. So this was your trailer of dissolution chapter. Now I hope that the meaning of dissolution of partnership and dissolution of partnership firm is clear to you. So that's it for today. If it is going above your head, then don't worry. We are here to solve all your doubts. We will do this entire chapter and it will be pretty much clear to you. So there is many more to learn in this chapter. So now see you all tomorrow with the next chapter at 4 p.m. And if you guys want these notes in the PDF form, then you can join us on Telegram group Vedantu Commerce. The link is given in the description box below. And if you are worried that how the syllabus will be completed, how the 13 or 14 chapters of class 12th will be completed, then don't worry at all. You can take this pro subscription to solve each and every of your problem, because in this you are getting more than 2000 hours of live online classes. You can watch unlimited live classes of all the subjects. Along with that, you will be getting more than 10 plus teachers having more than 5 years of experience. So all the teachers will be highly qualified and they will continuously work on your areas of improvement. All the teachers will work on your weakness. We will also provide you assignments regularly. We will conduct tests for you regularly. And
the most important thing, that all the classes will be conducted in English only. So all the sessions will be conducted in English only. The actual price of this pro subscription is 3499 for 1 month. But don't worry, because you have to pay only 2799 right now. Because we are providing flat 20% off to you. So go and take your pro subscription right now for your class 12 at 20% discount by using my code SCPRO. And the new batches are going to start soon from 30th March. So go and grab your seats right now for your class 12. So guys, if you are new to this channel or if you have not subscribed to the channel yet, then please take a moment to subscribe to our channel for more such classes. And also do like this session and do share this with your friends. Now, see you all tomorrow at the same time 4 p.m. with the next session. Till then, good night, have sweet dreams and take care. Thank you everyone for watching this session. I hope that you guys enjoyed this class. So don't forget to give it a big thumbs up. So bye guys. See you all in the next session.